Coming back to the Prime Minister's visit to France, the two leaders, Prime Minister Modi of India and President Macron of France, had a 90-minute-long one-on-one meeting last night. They discussed many issues, including Kashmir. Here are the key takeaways. 1. France completely endorses India's position on Jammu and Kashmir. President Macron said that Prime Minister Modi explained the situation on the ground very well to him in detail. France backs what India says, that Kashmir is a bilateral issue to be settled only between India and Pakistan. Now, Macron was categorical. He said no third party should interfere or incite violence in Kashmir, and that statement is remarkable given the timing. This is just ahead of the G7 meeting and at a time when US President Trump is seeking to interfere in Kashmir. That's what makes Macron's words very significant. Le Premier ministre m'a décrit la situation qui prévaut après la décision de l'Inde d'abolir le statut spécial de l'État de Jammu et le Cachemire. Et j'ai pour ma part rappelé qu'il appartenait à l'Inde et au Pakistan de résoudre leurs différends dans le cadre bilatéral, qu'il est de la responsabilité des deux parties d'éviter toute dégradation sur le terrain de nature à conduire à une escalade, de même que tous les efforts doivent être faits pour mettre fin à l'organisation d'actions terroristes transfrontalières. The French president not only spoke in favor of India, he also had a simple message for Imran Khan: stop trying to internationalize Kashmir. De part et d'autre de la ligne de contrôle. Et nous tenons beaucoup à cet esprit d'apaisement, de dialogue. Et nous tenons beaucoup à l'efficacité de cette politique de stabilité et de lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi aussi, comme je l'ai dit au Premier ministre Modi, j'aurai dans les prochains jours un échange en ce sens avec le Premier ministre pakistanais pour lui rappeler aussi la volonté de la France de voir cette question traitée dans le cadre bilatéral, mais le souci de la France de préserver la stabilité dans la région et la lutte contre toutes les formes de terrorisme. This common stance against terror is not only limited to the current situation in Kashmir, it's a partnership that goes a long time in history. हम दोनों देशों को आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन का लगातार सामना करना पड़ रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुकाबला करने में हमें फ्रांस का बहुमूल्य समर्थन और सहयोग मिला है। इसके लिए हम प्रेसिडेंट मैक्रो का धन्यवाद देते हैं। हमने सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर सहयोग को व्यापक बनाने का इरादा किया है। Which brings us to the second major highlight, the Rafale fighter jets. Both leaders confirmed that the first Rafale fighter jet will be delivered to India next month. डिफेंस कोऑपरेशन हमारे संबंधों का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे प्रसन्नता है कि विभिन्न परियोजनाओं पर हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं। 36 राफेल में से पहला विमान अगले महीने भारत को सौंपा जाएगा। हम टेक्नोलॉजी और को प्रोडक्शन में सहयोग को बढ़ाएंगे। By the way, there's a comment of the Indian Prime Minister that probably did not get the attention that it deserves. During the press briefing, Mr. Modi stressed on the need to speed up the work on nuclear power projects. Remember, France is the first country that signed a civil nuclear agreement with India. That was a decade ago. Now, Mr. Modi wants to accelerate the project to cut down electricity costs. France पहला देश है जिसके साथ हमने न्यू जनरेशन सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है। हमने अपनी कंपनियों से आग्रह किया है कि वे जेतापुर प्रोजेक्ट पर तेजी से आगे बढ़े और बिजली की कीमत को भी ध्यान में रखें। So defense and nuclear cooperation solid as ever. Takeaway number 3, France understands India's importance in the global arena. During the presser, Mr. Macron repeatedly highlighted India's importance at a global forum like the G7. La participation de l'Inde que j'ai souhaité au sommet du G7 de Biarritz était en effet à mes yeux essentielle. Cela fait partie de la recomposition du système international à laquelle nous devons travailler parce qu'il est impossible aujourd'hui sur des enjeux tels que la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité, la protection de nos libertés dans l'espace numérique, de ne pas compter avec l'Inde dans le monde tel qu'il est, et pour les raisons mêmes que je viens d'évoquer.
President Macron said that it is impossible to fight challenges like digital freedom and global warming without the support of India. In fact, France wants India's full membership at the G7 and supports India's bid for a permanent seat at the UN Security Council. Cette démarche de pleine association de l'Inde aux responsabilités de la gouvernance mondiale, nous l'avons décidée pour le G7 comme nous la portons au Conseil de sécurité des Nations Unies en soutenant son accession au statut de membre permanent. Though India is not a member of the G7, France has invited the Indian Prime Minister for the outreach session. The last time India was invited for such a meeting was way back in 2005. It was then called the G8. Russia was out, is now out now, so it's G7. That meeting was in Britain and the then Prime Minister Manmohan Singh had attended. Now, highlight number 4. The Indo-French relationship is much more than just about the economy or defense. Both leaders share common views on climate change, environment and even Make in India. प्रकृति का विनाश कभी भी मानव कल्याण के लिए उपकारक नहीं हो सकता है। आज आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी के समावेशी विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए फ्रांस और भारत एक साथ मजबूती से खड़े हैं। Now, Prime Minister Modi reiterated India's commitment to the Paris climate deal. He said that India will meet its 2030 climate targets in just a couple of years. Put simply, Macron and Modi are on the same page on almost all major international issues, which brings us to the last key takeaway from the meeting. India and France have a common shared view of the Indian Ocean and the Indo-Pacific. This is very important. These two countries signed 4 agreements yesterday. One of them is about implementing joint maritime surveillance in the Indo-Pacific. And why is this crucial? Because China has been strategically increasing its access in the Indian Ocean region. To keep a check on China, India and France will launch satellites for surveillance. The French space agency CNES is going to set up a center and for that in India with the collaboration of ISRO. And the two countries will also work together on digital and cyber security. In a nutshell, it has been a rewarding trip with India ticking all the boxes in France.